Hi guys, so let's continue with the fourth technique, cluster analysis. So here he has given an overview of the techniques we have learned so far, and out of them, the two dependence techniques are regression and conjoint analysis, and the two interdependence will be factor and cluster analysis. So when we are talking about, please read the why they are used, when they are used, and all of that from the slides and the book also. So we start with cluster analysis, and so cluster analysis is basically used as a segmenting tool, right? So when you're when you have a bunch of respondents, you have recorded data along lots of variables, and you need to make sense of the data in terms of groups or clusters of respondents. So you need to figure out if there are certain patterns or certain kinds of respondents in the data that you've collected. That's when you use cluster analysis. So essentially, when we say segmentation, targeting, positioning, that segmentation that we are doing is cluster analysis. And how clustering is different from classifying is something that might be asked by AD. He was really focusing on this in a class. Is that cluster mein you basically do not describe. You have segmentation variables on the basis of which you group similar type of respondents and move, like push away dissimilar kind of respondents. And in classification, what happens is that you know the level of the classes, you know which are the groups, and you know the labels. You have labeled them, and then you are putting the data into it. So in exact terms, uh, classification is basically where you have a priori knowledge. Like if you remember from factor analysis, you have a priori classes and groups, and you have described them, and you are putting the data into that. Clustering is a process, is an experimental process where you are trying to figure out through iterations which respondents are similar to, which can be grouped together in a cluster. So let's move ahead. Discriminant analysis is, I don't think it's a part of the syllabus, so we'll not get into that. So yeah, this is an ideal clustering situation where this is a two variable clustering situation. So basically it's two dimensional, if you can understand. So two dimensional mein the respondents are so distinctly separated from each other, but yet there are respondents within groups. So each group is totally like separate, discrete from each other, but within groups there are respondents who are very similar. So this is how an ideal clustering situation should look like. But an actual clustering situation, I mean, when you actually plot data of respondents, you will get like random data, like it will be scattered all over, right? But you have to make sure that there is a system, there is an algorithm which can figure out how you are defining कि कौन सा कितना similar है, like how similar is similar for you. तो कि यू हैव टू सेट अ थ्रेशोल्ड कि इसके बियॉन्ड जो है ये सिमिलर नहीं है मेरे लिए, सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. उसके बाहर जो है दे फॉर्म अ डिफरेंट ग्रुप. सो दैट्स व्हाट यू विल डू विद द डिफरेंट क्लस्टरिंग formula or the clustering processes that we'll look at. So these are the steps for conducting a cluster analysis. The first thing which you will have to do is decide the segmentation variables. This might look like it's a simple task, but it is the most crucial task because सपोज तुम्हारा सेगमेंटेशन वेरिएबल्स तुमने ऐसे सिलेक्ट किया कि यू कैन ऑलरेडी फाइंड अ पैटर्न कि almost all respondents are huddled together in one point. There is no dispersion, there is no scattering. There is a lot of correlation between all kind of respondents, which means you cannot conduct a clustering analysis. You cannot create subclusters in that group because all of them are huddled together. So an ideal
selection of segmentation variables will give you a scattered, a very dispersed uh, data set. तो सपोज तुम्हारे एक कॉर्नर में 60 पॉइंट्स होंगे, दूसरे कॉर्नर में 100 पॉइंट्स होंगे, तीसरे कॉर्नर में 40 पॉइंट्स होंगे. दैट इज हाउ यू विल फिगर आउट कि हाँ तुम्हारा सेगमेंटेशन वेरिएबल्स सही है. इफ ऑल ऑफ देम आर क्लस्टर्ड, लाइक इफ ऑल ऑफ देम आर हडल्ड टुगेदर इन द सेंटर और एट वन पॉइंट दे आर हेवीली स्क्यूड, विच मीन्स तुम्हारे सेगमेंटेशन वेरिएबल्स में कुछ गलती है, because you have picked a variable which has very high correlation with the other segmentation variables. So this is one huge uh, critical factor. Uh, just one sec. So yeah, so once you have decided on segmentation variables, you need to figure out key which will be your profiling variables. So segmentation variables अलग होते हैं, profiling variables अलग होते हैं. So usually जिस variables पे तुम segment कर रहे हो, let's say age or income, say you have segmented the stuff, and then while you have created the clusters, let's say hypothetically you have created 2 3 groups कि हाँ ये एज और ये से इनकम का एक ग्रुप होता है, दूसरा ये एज से ये इनकम का दूसरा ग्रुप होता है. नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब them. So here you can use other variables which you have not used for segmentation, and those will be called profiling variables. So you can say that age 18 to 25 with an income of XYZ prefers watching Netflix, and uh, age 40 to 45 with an income level of ABC prefers watching television. So prefers watching जो ये है, जो psychographic एक variable हमने add किया, this will your profiling variable. It's not your segmentation variable. So this might come as a question also. Uh, so coming back to the process, if you look at segmentation variables you have selected, and तुम देख रहे हो कि graphically they are all scattered and diverse. Now you have to select a distance measure. We'll talk about what a distance measure is, what they do. It's basically figuring out कि on what basis, on what criteria you will decide uh, how similar, how or on what criteria you will decide similarity between the respondents. तो तुम जो बोलोगे कि we are going to group similar respondents or similar objects here, so the distance measure will be the criteria on the basis of which you are measuring similarity. So it could be Euclidean distance, for example, which is like the displacement between point A and B, like the direct straight cut distance, or it could be something else also. We'll look at it. Then third will be select a clustering procedure. There's a huge chart on clustering procedure. We'll go through that also. Then the number of clusters. Then you will create the interpret and profile the cluster. So using the profiling variables which we spoke about before, you will make descriptive groups, like you will describe those clusters that you have made, and then you will check whether the clusters you have made are valid or not through several procedures. So we'll go through each of these steps in detail. Okay. So yeah, deciding on the segmentation variable, as I spoke, is very important, because अगर तुम्हारा segmentation variables गलत होता है, then तुम्हारा clustering बाकी सब all the process will go haywire. It will be wrong. And also you can figure out which are the segmentation variables based on the research question that you are trying to find out. And also while exploratory research, while doing focus group discussions or interviews, you can figure out कि कौन से variables पे तुम्हें segment करना चाहिए. So the distance measure is, yeah, यहाँ पे 3 distances दिए हुए हैं. If you want to really know, let's just quickly show you this picture. Is my screen visible? Can somebody can you see my Google tab? Yep, yep. Okay. So there was an image here. Yeah, this is the perfect. If you can understand this, you got it. So Euclidean distance is basically the जब तुम coordinate geometry में trace करते हो, so point B to point A, ये जो distance है जो green में है, this will be your Euclidean distance. Is the root of
the distance, like coordinate geometry में x1 minus x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square का square root. So it's a hypotenuse of this right angle triangle. Okay, that is a Euclidean distance. Manhattan distance is nothing but the base and the height of this triangle. If you add the base and the height, this will give you a Manhattan or city block distance. And Chebyshev distance is basically either the base or the height, whichever has the maximum value, which it will take that as a Chebyshev distance. So इसमें कुछ समझने का नहीं है. If you really are into it, it's great. I got carried away. But yeah, so basically you can take any three of these distance to figure out कि अगर if I say that my Euclidean distance between two respondents अगर कम होता है, then they are similar, then I have to define that कि मैं कह रहा हूँ कि for me in this model similarity is Euclidean distance being minimum between two respondents. Okay, so similarly it could be city block or Manhattan distance or anything else. Once you have selected that, then we get into the clustering procedure. वो क्लस्टरिंग प्रोसीजर में इतने सारे हैं, इसमें से I'll tell you linkage methods, variance methods और centroid methods of agglomerative clustering. These are the main things that he has taught. Divisive he hasn't taught really like properly. और नॉन हायरार्किकल में इतना सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है. He just taught k means clustering in non hierarchical. एंड अदर में जो टू स्टेप है, इट्स नथिंग बट अ टू स्टेप वर्जन ऑफ हायरार्किकल. ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस. What happens is, let me just see if he has put any. Oh yeah, he has put some diagrams. Cool. So इसमें क्या हो रहा है कि सपोज we go back to these terms. Okay, first what is hierarchical, what is non hierarchical. तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग का मतलब ये हो रहा है कि सपोज तुम्हारे सारे रिस्पोंडेंट सब डेटा तुम्हारे प्लॉटेड है ग्राफ में. अब तुम एक एक करके रिस्पोंडेंट्स को जोड़ रहे हो टू फाइंड आउट योर ग्रुप्स वन बाय वन इन आइटरेशन. दैट इज अ हायरार्किकल. सो सपोज तुम्हारा let's say point A to point B, respondent object A and object V becomes one cluster A. Then cluster A will become join with let's say object C and become cluster B. ऐसे करके तुम्हारा हायरार्किकली लाइक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है. नॉन हायरार्किकल में क्या हो सकता है कि देयर कैन बी पैरेलल क्लस्टर्स फॉर्मिंग एट द सेम टाइम. सो चार कोना से चार क्लस्टर्स एक साथ फॉर्म हो रहे हैं. सो इट्स नॉट हायरार्किकल, इट्स पैरेलल. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन हायरार्किकल. अब हायरार्किकल के अंदर देर आर टू टाइप्स, एग्लोमरेटिव और डिवाइसिव. Agglomerative, as the word suggests, means that the cluster is forming by accumulating one object after the other. तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. So what the algorithm will do is वो एक रिस्पोंडेंट से शुरू करेगा और खत्म करेगा एक क्लस्टर में वेयर ऑल द रिस्पोंडेंट्स आर इन वन क्लस्टर. तो वो एक एक करके रिस्पोंडेंट्स को खाते जाएगा, ऑब्जेक्ट को खाते जाएगा, एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड विल बिकम अ वन होल क्लस्टर. दैट इज एग्लोमरेटिव. डिवाइसेस में क्या होगा कि वो स्टार्ट करेगा एक क्लस्टर से और एक एक करके ऑब्जेक्ट को छोड़ता जाएगा, एक एक करके ही विल इट विल कीप ऑन eliminating respondents until you have only one respondent left. This is the basic difference between agglomerative and divisive. Now speaking of agglomerative के भी अंदर जो तीन मेथड्स है, लिंकेज, वेरिएंस एंड सेंट्रॉइड. इसका ये डिफरेंस होता है कि लिंकेज में, लेट्स कम टू लिंकेज, इज द सिंपलेस्ट थिंग. लिंकेज में बेसिकली सपोज single linkage basically means that the distance between the nearest two objects in two clusters will be considered, sorry, while taking this into account. तो क्या होता है कि सपोज ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, इट विल फाइंड आउट कि अगर इनका जो मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल, अगर वो मिनिमम है अमंग ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स, देन इट विल पुश देम, मेक इट इनटू, देन दे विल जॉइन इट इनटू वन क्लस्टर. अब उस क्लस्टर का जो नियरेस्ट पॉइंट होगा टू पॉइंट सी,
सो नाउ पिक्चर दिस, क्लस्टर में दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, और एक तीसरा पॉइंट है पॉइंट सी। अब पॉइंट सी से वेदर पॉइंट बी का या पॉइंट ए का जिसका भी मिनिमम डिस्टेंस होगा पॉइंट सी से, that will that will be taken into account while clustering. So the nearest points will be taken into clustering when you're merging two objects, whether it is a cluster or a respondent or a single object basically. So cluster versus cluster, cluster versus respondent, respondent versus respondent, whichever is the nearest distance, that it will link. That's it. कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, ऑपोजिट। सो बेसिकली जो फारदेस्ट पॉइंट्स होगा फ्रॉम टू क्लस्टर्स, व्हेन यू आर मिक्सिंग टू क्लस्टर्स, उनके जो फारदेस्ट पॉइंट्स होगा उसको वो कंसिडर करेगा एंड देन इट विल लिंक इट। और एवरेज लिंकेज इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ क्लस्टर। जो दो क्लस्टर्स है, ऑल द पॉइंट्स का एवरेज डिस्टेंस निकाल के वो बोलेगा जिसका एवरेज डिस्टेंस सबसे कम है उसको वो मर्ज करेगा एज वन क्लस्टर। दैट्स द बेसिक फंडा। ओके, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट गो थ्रू इट, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट इज, दिस इज व्हाट वी यूज द मोस्ट, वेरिएंस मेथड और द वॉर्ड्स मेथड। सो वेरिएंस मेथड में क्या होता है कि अच्छा, नो बिफोर वी गो इनटू वेरिएंस, आई थिंक सेंट्रॉइड वाला इजियर होगा बोलना। सो या, सेंट्रॉइड इज ऑल्सो यूजिंग द डिस्टेंस ओनली, लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस को ही मेजर करके वो कर रहा है। So what happens in the centroid is कि instead of taking the nearest points or the maximum points or the average distance, like maximum difference भी नहीं, minimum भी नहीं, average भी नहीं, what it will do is, once you have, let's say, two three objects formed in a cluster, it will measure the distance to the next object from the centroid of that figure. तो सपोज सेंट्रॉइड क्या होता है, इट्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी ज्योमेट्रिक फिगर, राइट? सो वेदर इट्स अ ट्रायंगल उसका भी सेंट्रॉइड होगा, वेदर इट्स अ ऑक्टागन उसका भी सेंट्रॉइड होगा। मतलब कोई भी पॉइंट्स का तुम एक वियर्ड एज शेप बनाओ, उसका भी सेंटर जो पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड द सेंट्रॉइड, वेयर ऑल द मीडियंस मीट बेसिकली। उस सेंट्रॉइड से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। सो दैट्स व्हाट द सेंट्रॉइड मेथड इज। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम मिनिमम एवरेज यू यूजिंग द सेंट्रोइड। सो as and when the clusters keep on increasing, the centroid का position will change, and accordingly you will keep on agglomerating or devising. But the variance method is a little different. Variance method में you are saying that distance is not the measure of my similarity at all. तो कौन सा रेस्पोंडेंट से कितना करीब है ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग एट व्हेन आई एम डिसाइडिंग सिमिलैरिटी। हाउ एम आई डिफाइनिंग सिमिलैरिटी? आई एम गोइंग टू से दैट द वेरियंस द वेरियंस ऑफ द लेट्स से ऑब्जेक्ट with all the other objects around me, जिसका भी वेरिएंस मिनिमम होगा उसको मैं एक क्लस्टर बनाऊंगा। दैट इज व्हाट्स प्रोसीजर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा है, then for each object the squared Euclidean distance to the cluster means is calculated. These distances are summed for all objects at each stage to cluster with the smallest increase in overall sum of squares with cluster different distances are combined. इसका बेसिक मतलब ये हुआ, ये जो स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस टू द क्लस्टर मींस लिखा है, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय n। इसको मेजर कर रहे हैं हम। x माइनस एक्स बार मतलब एक पॉइंट से उस क्लस्टर के मीन का डिफरेंस, उसका स्क्वायर का जो भी मिनिमम होगा, जिसका भी इंक्रीज सबसे कम होगा, उसको मैं क्लस्टर में ऐड कर दूंगा। That's literally Ward's process. So instead of using distance, we are doing variance. And you have made sense of, if you have understood this, you have made sense of all this hierarchical, all of this is understood. अब बाकी बचा क्या, नॉन हायरार्किकल। इसमें सिक्वेंशियल पैरेलल ऑप्टिमाइजिंग ये अच्छे से नहीं पढ़ा है हम लोगों को। व्हाट ही सेड वाज, ही बेसिकली स्पोक अबाउट पैरेलल थ्रेशोल्ड ओनली, जिसमें के मींस क्लस्टरिंग बोल के एक चीज होता है। Let me just see. Yeah, it's written here. So yeah, so non-hierarchical clustering में जो k-means clustering है,
उसमें ये होता है कि यू नो बिफोर हैंड कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे। ठीक है, हायरार्किकल में ये नहीं होता है। हायरार्किकल में यू आर एक्सप्लोरिंग, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड फाइंडिंग आउट कि कितने क्लस्टर्स बन सकते हैं। एंड के मीन्स में यू नो बिफोर हैंड कि इतने क्लस्टर्स चाहिए मेरे को। सो इट्स मोर ऑफ अ क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज देन अ क्लस्टरिंग एक्सरसाइज। सो अगर हायरार्किकल एक्सप्लोरेटरी है कि तुम फिगर आउट कर रहे हो, मैं ढूंढूंगा कितना क्लस्टर बनेगा, तो नॉन हायरार्किकल इज कॉन्फर्मेटरी, कि मैं वापस, सपोज हायरार्किकल से मुझे पता चला कि 3 क्लस्टर बनेंगे, तो उसके बाद में नॉन हायरार्किकल में जाके 3 क्लस्टर सोल्यूशन मांग कर, लाइक आई आस्क फॉर 3 क्लस्टर सोल्यूशन एंड, तो के का वैल्यू वहाँ पे 3 होगा, और वो 3 सेंटर से क्लस्टर करना शुरू करेगा। 3 के सेंटर से it will start clustering and it will form 3 clusters and give me, and then I will compare the two results and see that मेरा exploratory research और मेरा confirmatory research सेम हुआ कि नहीं और कितना डिफरेंट हुआ। that is k means clustering. एंड या 2 स्टेप क्लस्टरिंग में 2 स्टेप होता है, प्री क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जिसमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग इज नथिंग बट व्हाट वी हैव डन बिफोर हैंड। तो प्री क्लस्टर्स में क्या होता है कि सपोज यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ डेटा, लाइक सपोज यू आर गूगल एंड यू आर गेटिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो तुम ए प्रायरी क्लस्टर्स बना सकते हो और उसके अंदर हायरार्किकल क्लस्टरिंग चला सकते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू कंसिडर लेट्स से 1 बिलियन people, you want to make a sample or you want to create random clusters between the 1 billion people into 1000 के इतने सारे क्लस्टर्स बनाने थे, और उन 1000 people का एक क्लस्टर उठा के तुम उसका सेकेंड स्टेप हायरार्किकल क्लस्टरिंग कर सकते हो टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन। सो दैट इज व्हाट 2 स्टेप क्लस्टरिंग इज। तो यहाँ पे you will get to know there were some advantages given for pre-clustering कि basically it saves on your computing power because 1 billion data points को compute करने में और 1000 में बहुत difference है, and also it saves on response time, so बहुत live clustering अगर तुम्हें करना हो तो I mean I guess big corporations and all they do that, I'm not too sure, I'm not going to get into that. And yeah, the con is that the accuracy will not be as good as normal one-step hierarchical clustering. And let me just see if I'm missing out on something. Uh, okay, done. Cool. So once you have selected the clustering procedure, and you have also selected key how you will define a proximity, you will run the analysis. So उसके पहले ये steps होंगे। सो डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग द डेटा सेट फॉर एनालिसिस, इसमें जो जो पॉइंट्स थे ये सब आरएम में किया हुआ था, हाउ टू डील विद आउटलायर्स, हाउ टू डील विद multicollinearity and how to deal with straight liners and all that. तो not a huge problem. अगर पूछते हैं तो we'll look into it if we have time in the end. Then you will basically create new relevant variables. Basically अगर तुम्हें 2 वेरिएबल को क्लब करना है, जो भी करना है, मल्टीकुलरिटी को हटाना है, फैक्टर एनालिसिस रन करके यू कैन मेक न्यू वेरिएबल्स विद न्यू फैक्टर्स को एंड ऑल दैट। कर लिया तुमने, सिलेक्ट कर लिया विच आर द सेगमेंटिंग वेरिएबल्स दैट यू वांट, देन यू विल टैकल द आउटलायर्स बाय कैपिंग देम टू स्टैंडर्ड डिविएशन। आउटलायर्स मतलब अगर तुम्हारे मीन के 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर जा रहा है उसका डेटा, तो यू विल कैप देम एट द अपर लिमिट विच इज अ 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। बहुत टेक्निकल है तो लीव इट। मिसिंग वैल्यूज ट्रीट करना, दीज आर ऑल डेटा क्लीनिंग स्टेप्स। मिसिंग वैल्यूज को यू कैन टेक एन एवरेज ऑफ other variables, sorry, other values, multicollinearity check, these are all those data cleaning stuff. Standardization, the standardization you do if you have collected data on different scales। तो एक का तुम 7 पॉइंट स्केल पे किया, एक का तुमने 5 पॉइंट स्केल पे किया, तो you can't compare the two variables, you can't put them in the same graph and call that a graph. So you have to standardize those scales, and then you can plot the graph, and then you will get the cluster solution, and then you will check whether it's making business sense or not. Okay, so how do you decide on the number of clusters? So here's where that I don't know if you guys remember
वो एक ह्यूज जंप होता है कोएफिशिएंट में, विच इज वेर यू स्टॉप द क्लस्टरिंग प्रोसेस. व्हाट हैपेंस इज बेसिकली आइदर एग्लोमरेटिव और डिवाइसिव, दोनों में अगर तुम सॉफ्टवेयर को बस बोल दो कि हाँ एग्लोमरेट करो या डिवाइड करो, तो इट विल, जैसे मैंने बोला था तब, कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड एंड इन वन क्लस्टर विच कंसिडर्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स, or it will start from one cluster and it will eliminate and end at one object, like all the objects will be discrete. So it is up to the researcher to decide कि इस पॉइंट के बाद क्लस्टरिंग बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इसके बाद कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है, लाइक द डिफरेंस बिटवीन clustering till now and the rest of the whatever, like the next step of clustering that we're going to do is so huge that I know that this is my uh, particular cluster that I want to look at. तो इसमें क्या हो रहा है कि हाउ डू यू रीड दिस आउटपुट इज बेसिकली हर स्टेज में यहाँ पे लिखा जाएगा कि कौन से दो ऑब्जेक्ट्स को क्लस्टर किया जा रहा है. So suppose you have a in the first stage it is written that the 14th object and the 16th object are getting clubbed into one cluster. ठीक है, so this is agglomeration schedule using Ward's procedure, so it's variance. तो इन दोनों का वेरिएंस सबसे कम था, इसलिए इनको सिलेक्ट कर लिया, इनको क्लब कर दिया. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है. एंड देन नाउ द नेक्स्ट स्टेज ओवर हियर मींस कि इसके बाद इस क्लस्टर को वापस एक जगह पे क्लस्टरिंग किया जाएगा सिक्स स्टेज पे. इफ यू वांट टू चेक सिक्स स्टेज में क्या हो रहा है, 10 और 14 क्लस्टर हो रहे हैं. तो ये जो 14 और 16 का जो क्लस्टर बना था उसके साथ 10 ऐड हो रहा है इन द सिक्स स्टेज. दिस इज रिटन ओवर हियर इन द सिक्स स्टेज. एंड इसका जो कोएफिशिएंट है ये 1 है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेज जहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट 6 और 7, ये दोनों का वेरिएंस सबसे कम मिला गया था आउट ऑफ ऑल द रिस्पोंडेंट्स. सो यू आर क्लबिंग देम and you will see that the next stage where this cluster will again appear is in the seventh stage where 6 and 12 were merged. तो 6 और 7 के क्लस्टर में 12 को ऐड किया गया सेवेंथ स्टेज पे. दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन. थर्ड स्टेज पे 2 और 13 को किया गया, so on and so forth. So what these cluster and 1 2 is written stage cluster first appears in, basically in this column if you see सिक्स स्टेज पे जहाँ पे 10 और 14 को क्लब किया गया था, वहाँ पे क्लस्टर 2 जो है 14, इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था फर्स्ट स्टेज पे, ये यहाँ पे लिखा गया है. सो यू कैन सी 14 वाज अपीयर्ड इन द फर्स्ट स्टेज. सो दैट्स व्हाट इट्स रेफरिंग टू, कि कौन कहाँ पे कौन से स्टेज पे क्लस्टर हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट, दैट इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर. तो इस कोएफिशिएंट का भी अगर हम लोग देखेंगे तो देर विल कम अ पॉइंट वेयर द कोएफिशिएंट विल जंप significantly, like insane amount of a jump. So like 79 to 172. अगर इसको रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन what we usually can do is we can take a base value and see the percentage growth, कि 51 minus 41 by 41, 64 minus 51 by 51, 79 by 64 minus 64, ऐसे करके अगर हम ग्रोथ देखें तो जहाँ पे ग्रोथ सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है ग्रोथ परसेंटेज, दैट्स वेयर यू शुड स्टॉप द क्लस्टरिंग. एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जो 17th स्टेज पे 79.69667 से नेक्स्ट स्टेज में जो 172 आ रहा है, दिस इज द सिग्निफिकेंट जंप एज कम्पेयर टू ऑल द अदर जंप्स. तो व्हाट वी विल डू एज अ रिसर्चर इसकी 17 में 17 स्टेज तक जो भी क्लस्टर बना है इसको वी विल कंसिडर एज वन क्लस्टर, और बाकी दो जो क्लस्टर बाकी है 2 और 4 और 1 और 2, इसको हम दो और क्लस्टर बनाएंगे, लाइक दिस विल बी टू डिफरेंट क्लस्टर्स. राइट, सो स्टेज 18 का जो बाकी है और स्टेज 19 का जो बाकी है, देयर विल बी टू अदर क्लस्टर्स. सो बेसिकली देयर विल बी टोटल 3 clusters. That's what I can understand, right? So yeah, see, this is called a dendrogram, which is a pictorial formation of the same. So you can see 14, 16, 10, 4 and 19, they are forming one cluster. Then उसको 18 के साथ एग्लोमरेट करने में इतना कोएफिशिएंट बढ़ा. फिर उसके साथ जो ये वाला क्लस्टर को एग्लोमरेट करने में जितना कोएफिशिएंट बढ़ा, उसमें एक सिग्निफिकेंट जंप था.
So this is what we're talking about. This is where we should end our clustering. So let's say अगर हम लोग ये जो इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस है, दीज आर बेसिकली सेइंग दैट यहाँ पे क्लस्टरिंग खत्म कर दो, इसके बाद यू आर हैविंग टू पुट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट टू क्लस्टर दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स. तो इसका मतलब ये है कि दिस ग्रुप 14 टू 18, 2 टू 20 एंड 3 टू 15, दीज आर थ्री डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स. तो यहाँ पे खत्म कर दो, इसके बाद इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है तुम्हें टू मेक देम इनटू वन ग्रुप, और उसके बाद इतना ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है टू फिक्स इट विथ दिस ग्रुप, द फर्स्ट क्लस्टर. सो आइडियली तुम अगर स्टेज वाइज फॉलो करोगे, it's great. But if you can see the dendrogram, if the dendrogram is given in the SPSS output, it will be very clear कि यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए और तीन क्लस्टर बनेंगे. 14 to 18, 14 16 10 4 19 18 will be one cluster. 2 13 5 11 9 20 will be another, and all these will be, the rest will be another cluster. So we have three clusters, and this was formed using agglomeration schedule using Ward's procedure. So this is a agglomerative, hierarchical agglomerative process using Ward's process, using Ward's procedure. ठीक है. सो इट्स अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग. तो यहाँ पे तुम्हें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि तीन क्लस्टर है. अब अगर इसको तुम्हें कंफर्म करना हो, नाउ यू विल गो इनटू के मींस क्लस्टरिंग, एंड उस पे तुम लिखोगे कि थ्री क्लस्टरिंग सोल्यूशन दो मुझे, और अगर वो तीन यही क्लस्टर देते हैं, देन यू नो दैट योर क्लस्टरिंग वाज करेक्ट. सो दैट्स अबाउट दैट. Yeah, these are some, just some checkpoints, you can go through it. So plain English समझ में आ जाएगा. So yeah, ideal cluster statistics. So optimality checks are there. So maximum cluster size less than 35%, minimum greater than 3%. So these are all hygiene checks. And yeah, so interpret and profile clustering, this is where once you have got those three clusters, now you can include, uh, let's say, some profiling variables which were you have collected data on in your research, but you have not used them for segmentation. So you can create tables, cross tabs, uh, and I don't think he's given the output here, right? No, he hasn't. So what happens is basically it's a simple plot of like cluster 1, cluster 2, cluster 3 ऐसे columns में दिया होगा, और and you can profile them on various, like each row will be a profiling variable. तो तीन क्लस्टर तुमने जो भी सेगमेंटिंग वेरिएबल पे क्लस्टर किया है, दोज विल बी योर कॉलम्स, एंड हर रो पे यू विल हैव अ प्रोफाइलिंग वेरिएबल, एंड हर प्रोफाइलिंग वेरिएबल का तुम्हारा एवरेज जो वैल्यू होगा, दैट विल बी written in the cell between a column and a row. So अगर if you can go through the books, you will find the output. It will be really easy. Just listen to what I'm saying. I don't have the image with me right now. So basically हर प्रोफाइलिंग वेरिएबल का जो रेस्पोंडेंट या क्लस्टर लेवल का जो एवरेज है, वो क्लस्टर बेसिस पे तुम्हें मिल जाएगा. सो अगर तुम्हारे पास तीन ग्रुप्स है, तो देर विल बी थ्री कॉलम्स, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, और तुम्हारे पास चार प्रोफाइलिंग वेरिएबल्स है which will be behavioral or psychographic or जो भी हो, like purchase, likes to purchase luxury goods, likes to wear sneakers, wants to watch TV more than 4 hours. These are your profiling variables. इनका जो तुम्हारा जो भी स्केल पे तुमने डेटा कलेक्ट किया है, मेट्रिक स्केल पे, उसका एवरेज वैल्यू तुम्हें क्लस्टर वाइज मिल जाएगा. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज कंडक्ट योर एनालिसिस एंड से दैट, and to do that, wait, I'll show you, I think. Yeah, we'll come to that later. So here you can do these four checks. So basically substantial मतलब ये होता है कि you will see whether your sample is large enough or not. ठीक है. डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि सपोज तुम्हारे पास तीन क्लस्टर है, and you are seeing how different is cluster 1 from cluster 2 and 3. So what will you do? You will take the average of cluster 1 and subtract that with the average of
cluster 2 and 3. Get it? So cluster 1 ka x1 minus average of x2 and x3. Similarly, for cluster 2, you will do cluster 2 minus average of cluster 1 and 3. Cluster 3 will you will do 3 minus average of cluster 1 and 2. So the difference between my average minus everyone else's average, that is differentiability. If that is high enough, then your cluster is differentiable. Stable तो ठीक है, segment should be robust over time, and this is nothing. And fourth is identifiability. This is also important, and this is a crucial difference between differentiability and identifiability. आइडेंटिफाइबिलिटी में तुम्हारा पॉइंट है कि तुम कितना स्टैंड आउट कर रहे हो, नॉट सॉरी नॉट तुम कितना स्टैंड आउट कर रहे हो, हाउ आइडेंटिफाइबल यू आर इन दैट क्राउड बेसिकली मीन्स यू माइनस द एवरेज ऑफ ऑल थ्री क्लस्टर्स. तो योर एवरेज माइनस द एवरेज ऑफ ऑल द क्लस्टर्स दैट देयर आर. डिफरेंशियबिलिटी में क्या था? योर एवरेज माइनस the average of the rest of the clusters. So if you're cluster 1, then you will subtract it from the cluster of all the other factors. Identifiability mein, you will subtract it with the average of all factors. That's a crucial difference in differentiability and identifiability. So this is how you can do your analysis. Here are some checks you can go through this key to find out कि तुम्हारा cluster valid है कि नहीं. ये said कि उसको randomly divide कर दो half में, all these kind of stuff. So delete variables randomly always. So this is थोड़ा intuitive. I don't think कि ये एग्जाम में इतना important आएगा. But yeah, that's the basic concept of cluster analysis. And एक और चीज, there was someone had written in the group about what difference between factor analysis and cluster analysis क्या होता है. We are just grouping similar things, right? So the answer to that is no. Factor analysis में you are looking for variables with high correlation with each other. तो जो variables का high correlation है, they will be grouped together. That is factor analysis. Cluster analysis में you cannot take variables which have high correlation, otherwise तुम्हारा जो graph बनेगा उसका respondents skewed data देगा तुम्हें, बहुत correlated data देगा तुम्हें. So segmentation में, cluster analysis में you are looking for variables with very low correlation. Factor analysis में you are inherently looking for or grouping variables with high correlation. So that's something I wanted to address, and I think we are done with you. I'm also running out of time, and yeah, that's pretty much it. Just go through all the SPSS output from Naresh Malhotra, and I think it should be sorted. So,